Very logical morning to all of you. I hope everyone is doing fine and I hope everyone is preparing well. Well, why not? We here at Vidhigya are your best pals that will guide you through every thick and thin. So, today's session concerns a very sensitive or much needed and doubtful thing that we all have been going through with regard in solving RC. RC section holds not much of your time, but that is only achieved through lot of skill. One common query that I receive every time is if understanding is correct, then time taken is more. If time taken is more, then you attempt less questions. Ultimately, negative marking and सही answers के बीच में जो एक score बनता है, that is not very satisfying and fulfilling. So ऐसा क्या किया जाए? What should be done so that you are able to at least score like a somewhere between 20, that is 20 is a really good score in only RC. So today in this session we are going to talk about accuracy. ऐसा क्या किया जाए कि हमारे आंसर्स जो हैं वो सही आए, बिकॉज राइट नाउ वी आर एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, अटेम्प्ट करते हैं, नेगेटिव मार्किंग की डर से कुछ छोड़ भी देते हैं, बट जो आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं दे आर नॉट कमिंग राइट. सो हमारी अप्रोच कहाँ गलत हो रही है, हम कहाँ सही नहीं समझ पा रहे हैं, व्हाट इज गोइंग लाइक आउट ऑफ द वे, व्हाट आर यू मिसिंग देयर, दैट स्मॉल एलिमेंट्स दैट आर just taken away from your hands. So we are going to discuss everything in this session. So let's begin, guys. What are like elements that you need to look for when it comes to RC? Okay, so first step being how to cope with RC. See, RC is not only about one thing, it is a collection of so many things. Reason being, for RC, you must have a good like reading speed, as they say. But right now we are in practicing phase. So हमारा main motive, our first step would be understanding the passage. Because what I believe is speed is something you can gain through practice. Like first you should focus on getting your answers right. So initial practice should be on understanding the passage. Skimming is not an option. I would never suggest ki skip through the lines because infer, conclusion, author's point of view, author's tone, mood, and the type of the passage, the theme, everything comes only and only solely comes on you reading the complete passage. So what our focus should be understanding the meaning of the passage. Just a few words that you skip are going to take away the entire meaning of the passage. And I would suggest to be thorough with the passage first. So if you are having hard time in reading, first remove that from your mind. Focus on only understanding. Because once you understand, trust me, all the four questions, all the five questions that are presented to you are based on the understanding. कई बार ऐसा होता है that paraphrasing नहीं कर पाते हैं, आंसर्स की सेम वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करते हैं इन द पैसेज एंड देन यू एंड अप बीइंग ये वर्ड तो इसमें पैसेज में दिया ही नहीं है, सो दिस कुडंट प्रोबेबली बी द आंसर. But here word paraphrasing is required and looking for similar meaning words. Sometimes they use some other word in the question and a different word is seen in the passage. So यहाँ हमारी paraphrasing होनी चाहिए. And yes, when you speed read, you mostly skip on all of those things. So, our first step right now, our focus right now is on understanding the passage. Gradually, slowly, when you have a knack of doing RCs, you get hold of it right. You can then move on to the next point, that is understanding as well as reading it quickly and then getting your answers right. So, focusing on first thing is vocab. If you have a good reading habit, you have
list of words in your mind at all times, some words that you have come across again and again, you have like a mindset कि इसका meaning यही होगा, the statement would mean the same thing, so that not waste any time here, and you can easily move ahead with that part. So concentrating on vocabulary, as they say, one single word can sway the entire meaning of the line. So if you are unaware of that one single word, you can lose your chance at understanding that particular paragraph or maybe even entire passage. Then comes practice. See, practice RC is something like it's not in your hands, but until like you have a flow, a gradual flow कि हाँ मैं इतने टाइम से ये कर रहा हूँ. So if you note, gradually you will develop that understanding of picking up pointers, picking up dot to dot things that are really related to your idea. Instantly, once you complete reading the passage, you will get the idea कि हाँ ये इस बारे में बात हो रही है. This is my prime focus. So this comes with practice. So please just make up your mind कि every day 2 to 3 RCs attempt करने ही हैं. And then don't get discouraged if the answers are coming wrong. Like I said, first focus on understanding. Then we'll focus on the speed. Read multiple articles. At this point of time, books, newspapers, e-journals, they are your best friends. You can probably do a reading club, something sort of thing. So it could be like fun also. It would take a little bit of load also from your mind. But reading is what is required in ample amounts. See, newspaper reading is a plus, it's an added advantage. Editorials, mostly we focus on editorials. Then sometimes to loosen your mood, you can pick up some good book, some novel. Reading, and reading. It will like give you an added advantage in solving RCs. Okay, moving on to next. Significant themes that you can follow is like don't just jump and read any book, but if you are focused on particular themes like science and technology, geopolitics, economics, social issues, and of course, you get excerpts from literature. So once in a while, if you pick up some good literature to read, your sources could be, yes, Hindu, The Guardian, The Indian Express, and some classic novels if you can get your hands on. And yes, like regular basis reading and focusing mostly on the editorials. Editorials these days, like it's the very creative version. So once you like get a knack of understanding editorials, how the writing goes, so I think this could be really helpful. And when you read like a bunch of articles from a certain newspaper, you get an understanding कि ये writing किस newspaper की है. That also comes from practice. So how to approach? One thing that is like certainly seen in everyone's mind is approach क्या होनी चाहिए. See, I believe in understanding a pattern. I believe in preparing a data. Data meaning what? कि when you have given a bunch of when you have like given a bunch of mocks, RCs attempt कर लिए, you should understand the pattern. कि ठीक है, which type of questions am I facing difficulty in? मेरी approach कहाँ गलत जा रही है? And the question that I'm trying to do, मेरी सोच के according ये गलत क्यों हो रहे हैं? Why are they not coming right every single time? So here you note a pattern. You note a data that this RC इधर मेरी approach सही थी, and that is why I got answers correct. And यहाँ similar meaning questions में मेरी problem आ रही है. So this is how when you make a note, you change your approach. Here change of approach is required. Here things are not going accordingly, and definitely यहाँ boss को change of approach चाहिए हमें. So when it comes to RCs, better understanding is the key. मीनिंग ही नहीं समझ में आया तो क्वेश्चंस तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे. So what we focus on is यहाँ पे keywords. जो main problem आती है that comes in conclusion, that comes in inference. हम लोग कई बार inference को conclusion से merge करके एक अलग ही meaning निकाल लेते हैं, जबकि हमारे पास two separate questions हैं. One is for conclusion and the other one is for inference. अगर
एक ही चीज पूछनी होती, देन व्हाई गिव टू सेपरेट क्वेश्चंस? Yes, so inference is different, very much different than conclusion. This is what we are going to focus on today. Focus on like understanding the difference between conclusion, between assumption, between inference. How are these three interrelated but at the same time अलग अलग क्यों है? इनके अलग questions क्यों आते हैं? Okay, one minute thing to keep in mind is author's perspective, author's point of view. कई बार हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं क्योंकि हम उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल के सोचने लगते हैं. बट लेट मी टेल यू, वी आर रीडिंग समथिंग विच इज प्रेजेंटेड बाय समवन. तो कई बार हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना पड़ता है, हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ता है. हियर इन दिस केस, वट एवर द ऑथर सेज, दैट शुड बी लाइक बिलीव्ड, ओनली दैट. कई बार जब हम अपना लाइक पॉइंट ऑफ व्यू लगा देते हैं, देन थिंग्स गो like take a U-turn. So focusing on following the usual way to read the passage completely, not skipping any minor detail, and trying to understand the main idea. At once, when you complete reading, you should be aware of the main idea of the passage. Questions based on inference, assumptions, tone, main idea, and theme are all based only on understanding. Guys, let's take a very simple example to understand this. चलो एक मूवी उठा लेते हैं. Let's pick one movie. When I say movie, movie is something that you have watched not once, not twice, बहुत बार देख ली है. So I think उसकी एक अच्छी, you have a knack of understanding. Okay, so let's pick a movie. Okay, I have two movies in mind, which are my personal favorites, and one of them is English Winglish. And I don't know, like, I'm not sure if everyone has watched it. So let's take Dangal here. Dangal is like a national movie. I'm sure everyone has watched it. So when I take movie Dangal, समझ लो ये passage है. This movie is the passage. Now, based on it, if I ask, what do you conclude? And based on it, if I ask, what do you infer? So ये दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं. When it comes to conclusion, I say हम ये conclude करते हैं कि कैसे एक father ने male dominant world में अपनी दो daughters को एक male dominant sport में ना ही enter करवाया, but they turned out to be gems and they even won medals for the country. So this is the conclusion. The movie talks about struggles of a father, that how he made his daughters flourish in a sport which is majorly men related. So ये हमारा conclusion हुआ. Conclusion is always based on what you see, like here in the movie. जो हमने मूवी पे देखा, मूवी के बेसिस पे हमने conclusion दे दिया. But on the other hand, if I say what do you infer, इससे आप क्या समझते हो, ये मूवी देख के हमें क्या समझ में आया, सो उसमें एक हिडन चीज भी आ जाती है. दैट इज सो व्हाट, कि ये मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट था, या अ स्पोर्ट विच वाज कंसिडर्ड टू बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू मेन. रेसलिंग, कुश्ती आर मैस्कुलिन स्पोर्ट्स एज दे से, बट उसके अलावा भी हाउ गर्ल्स, हाउ women flourished in such sports. तो वो बात करता है women की पावर पे, द कॉन्फिडेंस ऑफ women, like if they think nothing is less for them. So ये इन्फर हो जाता है कि हम इस मूवी से ये इन्फर कर सकते हैं that in a male dominated world, women have made a place for them based on the confidence. एक ऐसे स्पोर्ट को कॉन्कर कर लिया जो कि सिर्फ मैस्कुलिन माना जाता था. So this is your inference. Let's discuss further. You better look for some keywords, guys. For example, position, opinion, judgment. That is based on hard facts, evidences and observation only and only from the passage. हम जो पैसेज में ऑब्जर्व करते हैं, पैसेज से ही एक जजमेंट बनाते हैं जो ऑथर ने हमें प्रेजेंट किया है. दैट इज आवर कंक्लूजन. Whereas
इन्फरेंस जस्ट लाइक कंक्लूजन डिराइव किया जाता है गिवन फैक्ट्स एविडेंस बेसिस पे ही, बट वो एक समझ पे डिपेंड करता है. दैट्स डिपेंडिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग. इट हैज सम हिडन अ बैकग्राउंड मीनिंग ऑल्सो विद इट, लाइक ऑथर ने क्या सोच दिमाग में रख के ये मूवी बनाई. दैट कुड ऑल्सो बी कम अंडर इन्फरेंस, कि ऑथर ने ये सोचा था, ये इन्फरेंस पे जाना चाह रहा था ऑथर, तभी ये पूरा पैसेज लिखा, तभी ये पूरी मूवी बनाई. Further, let's take a simple example to understand between conclusion and inference. India has fought many wars with Pakistan and China. There are frequent skirmishes and tension even now on India's northwestern borders. The LOC is often challenged by the parties involved. A similar issue is observed with Bangladesh. तो ये neighboring countries की बात हो रही है and their relationship with our country India. They have also mentioned the LOC. इसमें से अगर conclusion निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे? That relations between India and Pakistan, also India and China, are probably not good. They are strategic enemies on the military front. ये लिखा तो इसमें tension, war, ये वर्ड्स हमें बताते हैं दैट देयर इज इशू गोइंग ऑन मिलिट्री फ्रंट. बहुत ही बेसिक फैक्ट्स के बेसिस पे मैंने कंक्लूजन निकाला है. नाउ कमिंग टू इन्फरेंस. इन्फरेंस में एक चीज और ऐड हो जाती है, जनरल. जो कंक्लूजन होता है दैट इज स्पेसिफिक. वो स्पेसिफिकली पैसेज को दिमाग में रख के स्पेसिफिकली पैसेज का कंक्लूजन बता रहे हैं. बट इन्फरेंस थोड़ा सा जेनेरिक हो जाता है व्हेन यू जनरली स्पीक. So generally speaking, this comes into your mind that absence of clearly demarcated borders may lead to unhealthy relationships with neighboring countries. ये हमारा inference है. Inference is general. हम आइडिया से नहीं हटे, हम पैसेज के कंक्लूजन से नहीं हटे, हम ऑथर ने क्या आइडिया दिमाग में रख के ये पैसेज लिखा है उससे भी नहीं हटे. Inference is also based on facts, whatever is presented in the passage. Just that हम उसको थोड़ा general way में बोलते हैं instead of going specifically. When specific things are asked, you go for the conclusion. So जब question में तुमसे conclusion पूछा गया है, you specifically understand कि passage में क्या conclude हो रहा है. How did the passage end with what thing in mind? That is the conclusion. वहीं इन्फरेंस जनरली बात करते हुए आता है, जनरली टॉकिंग अबाउट थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल एब्सेंस ऑफ क्लियरली, ये रिफ्लेक्ट कर गया पूरे पैसेज में कि अगर बॉर्डर्स क्लियरली हाईलाइटेड इधर नहीं है, एब्सेंस ऑफ क्लियरली डिमार्केटेड बॉर्डर्स, इससे क्या हो सकता है? ऑब्वियसली अनहेल्दी रिलेशनशिप, ज्यादा फाइट, ज्यादा क्वारल, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे बिटवीन कंट्रीज अगर बॉर्डर्स क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है तो. This is what comes under inference, which talks about being general. Generally बात करें तो that is inference. But on the other hand, conclusion, my friends, is specific. Clearly talking about being specific to the passage. एक और टर्म आरसी में देखने को मिलता है, imply. सो अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि इन्फरेंस ये होता है, कंक्लूजन ये होता है. देन यू मस्ट बी वंडरिंग, मैम अब तो इम्प्लाई पूछ लिया, इम्प्लाई में क्या करें? दे विल गिव यू सर्टेन लाइंस ऑफ फ्रॉम द पैसेज एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू लाइक इम्प्लाई हियर. इन लाइन से क्या समझते हैं आप? इन लाइंस में क्या इम्प्लाई कर दिया? क्या इम्प्लीकेशन मिल रही है हमको सो एंड सो लाइंस फ्रॉम द पैसेज में? लेट्स डिस्कस. To imply means something that is hinted or suggested by the author. Directly नहीं बोल रहे हैं. It is not said directly. कोई पैसेज दिया है, उसमें एक चीज क्लियरली दे दी है, but some ideas were also presented by the author. जो directly आपको नहीं दिए गए, they were just suggested. फॉर एग्जाम्पल मूवी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. दंगल में आ जाओ वापस से. दंगल में ऑथर ने बोला कि
द फादर वांटेड टू हैव लाइक मेल चाइल्ड सो दैट वो उसको देश के लिए वो गोल्ड मेडल ला सके इन रेसलिंग बिकॉज दैट वाज हिज ड्रीम द वन he wanted his sons to achieve but he never had a son all he had was daughters so what did he do उसने अपना सोच गिव अप नहीं करी ही हैड अ रियलाइजेशन कि जरूरी थोड़ी है कि लड़के ही जाके रेसलिंग कर सकते हैं व्हाई नॉट गर्ल्स राइट सो ये अगर आपको लाइन दे दी कि जब जब मेन कैरेक्टर ने बोला मारी छोरियां छोरों से कम है के व्हाट वाज ही ट्राइंग टू इम्प्लाई सो इसमें इम्प्लीकेशन क्या निकलता है that the main character didn't think his daughters were any less than being sons. तो ये पर्टिकुलर लाइन ये सजेस्टेड थिंग है ये जो पिक्चर बना रहे थे जिन्होंने पिक्चर लिखी उनका ये सजेस्टिव आइडिया था कि यही चीज को दिमाग में रख के उन्होंने अपनी डॉटर्स को ट्रेन किया फॉर रेसलिंग सो दिस इज वेयर इम्प्लीकेशन कम्स ये होता है इम्प्लाई व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू इम्प्लाई एक हिंटेड आइडिया जो डायरेक्टली नहीं कहा गया डायरेक्टली ये बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया नहीं भाई गर्ल्स कहाँ रेसलिंग में जाएंगी तुम अपनी बेटियां क्यों भेज रहे हो ऐसा क्यों तो डायरेक्टली ना बोलते उसने एक लाइन बोल दी कि मेरी बेटियां लड़कों से उसने लड़कों की बुराई नहीं करी उसने ये बोल दिया मेरी बेटियां लड़कों से कम है क्या सो दिस इज लाइक इम्प्लीकेशन चलो लेट्स read one more thing which is very important to infer it means to deduce given facts given evidence जो भी दिया है उससे एक आइडिया डिड्यूस कर लेना that is inference if you encounter please note everyone if you encounter an RC question which asks you what does the author imply by this and that it just means that you need to tell what the author means by those lines. What is the hidden message? बैकग्राउंड में उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा क्या बोलना चाह रहा है क्या इंडिकेट करना चाह रहा है indicate in those lines like we did the example so what was indicated was a hidden message okay assumption inference हो गया conclusion हो गया imply हो गया अब ये assumption क्या है how is assumption different now assumption को कैसे समझा जाए see assumption as the word says assume से आता है but here what do we do हम खुद से कुछ भी assume नहीं करेंगे do not assume anything on your own अपना point of view एक जगह पे रख देना because this passage has been written by an author so author's assumptions are being taken into consideration कभी कोई फैक्ट प्रेजेंट किया ऑथर ने उसका एक कंक्लूजन निकाला हमने इन सबके पीछे जो चीज चल रही थी जो ऑथर के दिमाग में थी एट ऑल टाइम्स वो थी अजम्पशन फिर से मूवी पे आ जाते हैं चलो थोड़ा और दंगल कर लेते हैं दंगल मूवी जो बनाई जिन्होंने लिखी चलो उनके दिमाग में हर वक्त एक ही चीज चल रही थी कि मुझे ये मूवी ऐसे प्रेजेंट करनी है कि मेरा ये जो मैसेज है कि गर्ल्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पोर्ट वो मैसेज मेरा क्लियरली आ जाना चाहिए ऑथर ने सोचा होगा कि मैं इसको कितना फोर्सफुली प्रेजेंट कर सकता हूं इस स्टोरी को कि मेरा मैसेज क्लियर जाए कि ये एक फादर की स्ट्रगल की स्टोरी है या हाउ ही डिसाइडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाउ ही डिसाइडेड कि एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स में अपनी बेटियां ट्रेन ना ही उसने ट्रेन करी बट दे केम आउट एज लाइक विनर्स तो मेरा ये मैसेज क्लियरली जाना चाहिए उसने क्या क्या चीजें अज्यूम करी दिमाग में रखी थी ये स्टोरी लिखते टाइम वो होता है assumption while conclusion is made inferences are also made based on facts evidence observation पूरा पढ़ के पैसेज पढ़ लिया सब लाइन अंडरलाइन कर ली सब देख लिया ये पॉइंट वो पॉइंट एवरीथिंग कम्स इन माइंड हमने ये डिड्यूस कर लिया ये इन्फरेंस ये कंक्लूजन जब ये सब चल रहा होता है assumptions are things that are presumed or presupposed
इस चीज को दिमाग में रखते हुए ऑथर ने ये पैसेज लिखा। ऑथर के दिमाग में क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों को बढ़ावा देना। मेरी इस पिक्चर से एक भी ऐसा, मेरी इस मूवी से, मेरी इस रिटन स्टोरी से एक भी ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए जिसमें गर्ल्स को मैं डिमोटिवेट करता हुआ दिखाऊं, समथिंग। ओके, तो ये होता है अजम्पशन। जो चीजें प्रिज्यूम्ड पहले से ही ऑथर के दिमाग में थी ये पैसेज लिखते टाइम, दैट इज अजम्पशन। देयर मे बी नो फैक्ट्स और एविडेंसेस बैकिंग अप assumptions। कई बार ऐसा हो सकता है कि अजम्पशन को प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पैसेज में कोई एविडेंस या फैक्ट नहीं दिया हो। प्लीज नोट, inference conclusion is drawn, that is understood by the reader, but जो assumption है, assumption is taken into consideration by author when he wrote the passage। इस चीज को दिमाग में रखते हुए हमारे ऑथर ने ये पूरा पैसेज लिखा। दैट इज द assumption that was kept in mind by the author। सो कभी चीजें जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं गाइस, व्हेन दीज पैसेजेस सीम टू बी लाइक अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, अंडरस्टैंड करो, इतनी चीजों में डिफरेंस समझो, इतनी चीजों को सॉल्व करो, व्हाई नॉट क्लियर योर फैक्ट्स यूजिंग सम सिंपल एग्जाम्पल लाइक दिस मूवी। जब आप चीजों को सिंपली समझ लेते हैं, व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी सिंपली, then you apply them to difficult things, and I'm sure this pretty much helps in understanding. So, before we practice, this is a very short passage with just one question of inference. So, we are going to focus here कि हमने इससे inference deduce कैसे किया। ठीक है, so to understand that, let's quickly revise. We came to discuss about conclusion. The session, our session here focused on conclusion और inference में फर्क क्या होता है। Conclusion which is entirely based on the passage, yes, facts, opinions, observations, author ने जो present करे हैं। Inference on the other hand is same, वो भी हम फैक्ट्स, ओपिनियंस और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही समझते हैं, बट कई बार देर इज अ हिडन मैसेज इन इन्फरेंस। अजम्पशन ऑन द अदर हैंड इज समथिंग जो ऑथर ने अपने दिमाग में रखा इस पैसेज को लिखते टाइम। तो जब आपसे अजम्पशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, आप उस पॉइंट पे चले जाओ कि ऑथर के दिमाग में चल क्या रहा था। जैसे एक पूरा पैसेज दिया है जिसमें इंडिया की इकोनॉमी डिस्कस कर दी है और उसमें कुछ लाइंस देके आपसे अजम्पशन पूछ लिया, तो ऑब्वियसली अगर वो पैसेज डाउनफॉल इकोनॉमी के बारे में है, तो ऑथर के दिमाग में यही चीज होगी ना कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कहाँ जा रही है भाई, कोविड के बाद पूरी डाउनफॉल आ गया है। तो ये अजम्पशन दिमाग में रख के ही उसने ये पैसेज लिखा होगा, टू स्टेट फैक्ट्स, टू स्टेट ओपिनियंस, टू गिव सम स्टेटिस्टिक्स, टू गिव सम नंबर्स। बट उसका assumption, एक आइडिया दिमाग में यही था पैसेज लिखते टाइम। सो दिस इज हाउ यू कम अप विद assumptions। चलो, now time to practice guys। Let's take to read the passage। I'll give everyone 2 minutes to go through this, read through this, and while we are reading, let's underline what we think is important here। सी, इस पैसेज में जो बात हो रही है, आई हैव अंडरलाइंड लाइक सेवरल थिंग्स टू रिफ्लेक्ट दिस। प्ले ऑफ फीचर से स्टार्ट हो रही है, and it's further talking about action of body, signs,
फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें कंसिडर करो तो expression of features. We are obviously talking about some bodily expression of features here. Emotional, जो दिमाग में चलते हैं, and corporeal, which are substantial, which are physical gestures. So, large number of corporeal gestures expressing intellectual operations require an admit of more variety and conventionality. Talking about corporeal gestures here. While, therefore, see ये जो terms रहते हैं ना, therefore, while, ये बहुत indicate करते हैं. कंक्लूजन बताने में, इन्फरेंस बताने में, these terms indicate a lot, they hint you कि ये कंक्लूजन हो सकता है. Therefore, the terms sign language and gesture speech necessarily include and suppose facial expression. दोनों में ही facial expressions की बात हो रही है. But when emotions are in question, they refer more particularly to corporeal motions and attitudes. आपकी क्या thinking है, क्या सोच है, उसके बारे में बात होती है. For this reason, of the much valuable of Darwin in his book Expression and Emotions in Man and Animals is not directly applicable to sign language. इसमें ये बताया है जो डार्विन की बुक है एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स वो साइन लैंग्वेज के बारे में बात नहीं कर रही इट हैज मच मोर फोकस ऑन द एटीट्यूड द थिंकिंग द इमोशंस his analysis of emotional gestures into those explained on the principle of associated habits of antithesis and the constitution of gestures which form the subject of this paper मतलब सब्जेक्ट ऑफ द पेपर यहाँ पे इमोशनल जेस्चर्स और जेस्चर स्पीच इन दोनों को कंसिडर किया गया है which often have an immediate pantomimic origin. The earliest gestures are doubtless instinctive and generally emotional, preceding pictorial, metaphoric, and still subsequent conventional gestures, even as, according to Darwin's cogent reasoning, they preceded articulate speech. सो इस पैसेज का जो मेन फोकस है वो हमें फीचर्स कॉर्पोरियल जेस्चर्स जैसे फिजिकल एक्शंस जिसमें साइन लैंग्वेज का भी नाम लिया गया उसकी बात हो रही है और इमोशनल लैंग्वेज लास्ट में ये बताया गया है कि जो डार्विन की बुक है दिस वन विच एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एज वेल एज एनिमल्स इसको हम एप्लीकेबल नहीं बोलेंगे साइन लैंग्वेज से क्योंकि इसमें बहुत सारी इमोशनल एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियरल उस पे भी बेस्ड बातें कही गई हैं. So what is our question? Which of the following can be inferred from the passage about corporeal gestures? Now, like we discussed, जो conclusion है वो पूरा fact based होगा, same inference, but inference में एक hidden thought भी कई बार mind में आ जाता है. Let's check here which of the following can be inferred. They always result from intellectual actions. They always result from emotional actions. एक emotional है, एक intellectual है. At least some of them result from the emotional actions. None of them result from the emotional actions. एक बार इधर line पे आ जाते हैं from the passage. Okay, now this is given here so far as a distinction can be made, expression of the features are result of emotional and corporeal gestures. अब आपने देखा इसमें तो दोनों ही mentioned हैं of intellectual action. The former in general and the small number of the latter are distinctively emotional, are nearly identical among men from physiological causes. Former means पहले वाला, latter means बाद वाला, like emotional and corporeal. So हमने अभी पैसेज पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि दोनों ही चीजें होती हैं, इमोशनल भी होती है, इंटेलेक्चुअल भी होती है. सो वो वाला कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों चीजें दी है? वो तो ऑप्शन ही नहीं दिया है. हियर व्हाट यू डू, यू रीड इट अगेन. पर क्या ये दिया है पैसेज में दे ऑलवेज रिजल्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्शंस? नहीं, हमारी ये समझ थी, हमने पैसेज पढ़ा, हमने समझा, ऑथर ये कंक्लूड करता है कि इन दोनों चीजों से हम फीचर्स की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल एज वेल एज इमोशनल. बट हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है जिसमें ये दोनों चीजें साथ में दी हों. बट ऑथर ने ये भी कभी नहीं कहा कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल होगा, ऑलवेज नो.
सिर्फ इमोशनल होगा ऑलवेज? नो, नन, नन तो होगा ही नहीं क्योंकि दोनों की बात हो रही है। एटलीस्ट सम ऑफ देम रिजल्ट फ्रॉम इमोशनल एक्शंस। उसका थॉट ये था कि कुछ इमोशनल एक्शन से भी होते हैं, मे बी रेस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम फिजिकल एंड substantial or corporeal gestures. So this is why here we choose answer C as correct. This is what we infer from the passage about corporeal gestures. जो corporeal gestures हैं, they might have somehow resulted, at least कुछ, some of them, कुछ तो रिजल्ट करे होंगे फ्रॉम इमोशनल एक्शंस। जो दूसरे तीन ऑप्शंस हैं दे टॉक अबाउट एक्सट्रीम चॉइसेस, ऑलवेज ऑलवेज एंड नन, ये तो एक्सट्रीम चॉइसेस में चले गए। बट एटलीस्ट सम, या दिस कुड बी लाइक एन इन्फरेंस, क्योंकि ये ऑथर का कहना ये है, दिस इज व्हाट ऑथर इज पॉइंटिंग आउट हियर। Okay, so this session was like to try to solve your queries of understanding the different questions that are offered to you in RC, so that you get a bit of clarity or some basic understanding between inference, assumptions, conclusion. Okay, so please practice more and more. Like I said, at least 2 to 3 passages per day is a must. Okay, so thank you so much, guys, and I hope you enjoyed the session. We'll come with more ideas to like help you combat the understanding of RC situation, and I hope you change your strategy, change your approach in the next mock that you give. So thank you so much, everyone, and let's just decide in our mind that we will definitely work on and on and never stop. Okay, so please like the video, press the bell icon, and do follow for more feed. Thank you so much. This is me, Palak Rajani, and I will see you all next time. Thank you so much, guys.